Hello everyone. So today we will discuss on the structure of the earth interior part. Now the crust. It is the outermost solid part of the earth. So जो outermost solid part है अर्थ का उसे हम crust कहते हैं. It is a brittle in nature. The thickness of the crust varies under oceanic and continental areas. ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एरिया दोनों पे थिकनेस ऑफ द क्रस्ट है वो अलग है. ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. द मेन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर वेयर दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर. यानी कि जो ओशन का क्रस्ट है उसकी मेन थिकनेस 5 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है 30 किलोमीटर. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम. इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन हिमालयन रीजन. जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे उसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक की है. नाउ द मेंटल. द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल. द एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. सो मोहो डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक को हम मेंटल कहते हैं. The upper portion of mantle is asthenosphere extending up to 400 km. The crust and uppermost part of mantle are called the lithosphere. Its thickness ranges from 100 to 200 km. Lithosphere की thickness है 100 से 200 km तक की. The core mantle boundary is located at the depth of 200 km. The outer core is in liquid state while the inner core is in a solid state. Mainly consist iron and nickel, sometimes also referred to as knife layer. So core is also called as the knife layer. So don't forget to subscribe my channel.